Assalamu alaikum, welcome back on Reti Educational Academy YouTube channel. In this video, I will share test sample paper solved that was uploaded by Sukkur IBA University. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सखर आईबी यूनिवर्सिटी ने टेस्ट सिलेबस चेंज कर दिया है सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम 2023 और 24 के लिए। तो अभी जो टेस्ट सिलेबस है उसका जो उन्होंने टेस्ट सैंपल पेपर अपलोड किया हुआ है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी ये मैथमेटिक्स के वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ वो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हैं, STHP के लिए। हाउएवर जो मैथमेटिक्स है, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BS मैथमेटिक्स एंड बी सिस्टम इंजीनियरिंग, वो बहुत हायर लेवल की है। तो आपने उसकी क्लास सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करनी है। हालांकि जो अदर प्रोग्राम्स हैं जैसे कि BS, बाकी जो भी BS प्रोग्राम्स हैं सखर आईबी यूनिवर्सिटी के, उनकी जो मैथमेटिक्स है वो एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो काफ़ी इजी है। तो वो जल्द से जल्द हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे काम शुरू करेंगे। अभी इस वीडियो में हम टेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 इंग्लिश 40 क्वेश्चन है STHP की टेस्ट में, लेकिन वो दोनों प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश, सबके लिए सेम ही है। 40 क्वेश्चन से जिस तरह से क्वेश्चन ये वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। आपने उस तरह की प्रिपरेशन करनी है। रेती एजुकेशनल एकेडमी जल्द ही इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रहा है, तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी हम इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 2022 लिखा हुआ है, लेकिन यही पेपर सेम 2023 के लिए है। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, तो टाइम सेव करने के लिए वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप देख लें। उसमें एक क्वेश्चन है इंग्लिश का जो है प्रीपोजिशन में अवर कॉलेज इज एफिलिएटेड डैश द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, उसमें 2 का आंसर दिया हुआ है, लेकिन वो करेक्ट आंसर ए विथ है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें दी हुई हैं, तो इसमें स्पेलिंग इस बार नहीं आएंगी इंग्लिश में, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम अपना ज़ाया नहीं करें। दूसरी चीज़ें जो बताई गई है वीडियो में उस पर ही ध्यान दें। बहुत शुक्रिया। चलें वीडियो देखते हैं। Comprehension. Read the following passage carefully and answer the questions set below it. Can we see that the earth is a globe? Yes, we can. When we watch a ship that sails out to sea, if we watch closely, we see the ship begin to disappear. The bottom of the ship disappears first, and then the ship seems to sink lower and lower until we can see the top of the ship, and then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? It is earth. Stick a pin most of the way into an orange and slowly turn the orange away from you. You will see the pin disappear just as ship does the earth. Question following the paragraph. Question number 1. This story is mainly about A. The shape of the earth, B. Traveling to the new world, C. Selling ships in the old days, D. The shapes of the fruits such as oranges. And the right answer is A. The shape of the earth. The ship in this story, A. Probably sank to the bottom of the ocean, B. Was going further and further away, C. Was actually a toy, D. Was a selling ship. And the right answer is B. Was going further and further away. Question number 3. A globe is shaped like A. A box, B. A pyramid, C. An orange, D. An ice cream cone. And the right answer is C. An orange. Now comes vocabulary synonyms. Their diet is often grossly unbalanced. A. Completely, B. Nearly, C. Often, D. Frequently. And the right answer is A. Completely. Question number 2. The whole thing is a vicious circle. A. Severe, B. Very bad, C. Dangerous, D. Critical. And the right answer is B. Very bad. Vocabulary antonyms. The most people then go hungry. A. Well kept, B. Well cared for, C. Well looked after, D. Well fed. And the right answer is D. Well fed. Question number 2. A particular country might be generous. A. Miserly, B. Moderate,
C. Extravagant. D. Frugal. And the right option is D. Frugal. Use of prepositions. The committee regrets that it cannot exceed dash your request for a month's paid leave. Option A, for. Option B, to. Option C, in. And option D, with. And the right option is B, to. Question number 2. Our college is affiliated dash the University of Sindh. A, with. B, to. C, for. D, in. And the right option is B, to. Now comes error detection. George has not completed the assignment yet and Maria hasn't neither. And the right option is D. Question number 2. The sun rose before I got up. And the right option is B. Rose. Use of verbs. Question number 1. Lucy is a good girl and dash for a brother. A. Long. B. Longs. C. Is longing. D. Longed. And the right option is C. Is longing. Question number 2. Mango is fruit that I dash. Am always liking. Have been always liking. Have always liked. D. Have been always liked. And the right option is C. Have always liked. Use of pair of words. Number 1. Some wicked dash made dash of their idols. A. Fun fans. B. Fan fun. C. Fans fun. D. Fans funs. And the right option is C. Fans fun. The male child who is the only dash to the property has long, smooth, golden dash. A. Hair hair. B. Hair hair. C. Hair's hair. D. Hair hair. And the right option is D. Hair hair. Use of tenses. I wish I were young forever. A. Present indefinite tense. B. Present perfect tense. C. Past indefinite tense. D. Past perfect tense. And the right option is A. Present indefinite tense. Question number 2. Death toll of the earthquake victims is feared to have increased. A. Past indefinite tense. B. Past perfect tense. C. Present indefinite tense. D. Present perfect tense. And the right option is C. Present indefinite tense.